जहाँ लाइनें लगती थी and suddenly you see that people are calling it a fall of a great brand. उसका एक regret है. The world's oldest meme is religion. Brahma, Vishnu, Mahesh. There's only one Brahma temple in India. Creator in India is never worshipped. In your work, gender has to play no or limited role. I don't agree there. I think gender plays a role in Indian businesses. क्या role play करता? What went wrong in the Future Group story? What you could have done differently? मुझे याद है कि 90s में अगर हमें कपड़े लेने होते थे तो पैंटलून का नाम जहन में आता था, और जब घर के राशन भरने की बात आती थी तो बिग बाजार की तरफ गाड़ी घूम जाती थी. पर एक सक्सेसफुल ब्रांड बिल्ड करना भैया कौन से स्कूल में सिखाया जाता है? सो इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे बनाएं एक सक्सेसफुल ब्रांड. हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश चौधरी और आज आप सभी के साथ मैं भी इस एपिसोड में सीखने आया हूं. और अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हैं और चाहते हैं एक लेगेसी बिल्ड करना, तो अभी ही जोश टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेयर वी अनलॉक द स्टोरीज ऑफ country's biggest legacies, one episode at a time. And today we have with us Mr. Kishore Biyani, founder and CEO of Future Group, along with her daughter, Ms. Ashni Biyani, the former MD of Future Consumers and founder and director of Think 9 Consumers. Welcome to this episode of Josh Talks podcast with Biyani. एक बहुत ही कामयाब जर्नी आपकी रही. जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई? कामयाब आई डोंट नो किसको बोलते हैं, बट जहाँ चाहते थे वहाँ नहीं पहुँचे. बट जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही. आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फैब्रिक ट्रेडिंग जी. एंड शुरुआत वहाँ से हुई कि पेरेंट्स के बिजनेस ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल था. एंड आई वाज मोर अ स्टूडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एट दैट टाइम. तो हमने सोचा कुछ नई चीज़ करनी है, तो मैं नई फैब्रिक कुछ डेवलप किया. अच्छा, वेस्ट इंडिजीनियसली. अच्छा. एंड वो फैब्रिक बहुत अच्छी चली, वो उसके गारमेंट बनने लगे. ओके. फिर उसके बाद मैंने एक स्टोन वॉश करके एक फैब्रिक बनाई, वो भी बहुत चली. तो गारमेंट इंडस्ट्री से संपर्क हुआ, तो मैंने बोला कि हम भी गारमेंट बिजनेस में जाएंगे. तो एक ट्राउज़र के बिजनेस, उस टाइम ट्राउज़र के ब्रांड नहीं होते थे. करेक्ट. तो हम ट्राउज़र के ब्रांड बनाए फर्स्ट. तो अब नाम ध्यान में आ गया, पैंतलून बनाते हैं क्योंकि पतलून एक फिल्म में जिक्र था गाने में. समय की बात करें तो आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? दिस वुड बी 84 टू 84 85 टू 90. That year. दैट जर्नी. आप सही कह रहे हो. उस समय रेडीमेड ट्राउज़र नहीं थी, तो रेडीमेड ट्राउज़र की ब्रांड बनाई. फिर हमने एक छोटी दुकान करी जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द आइडिया वेदर ये सही है नहीं है. तो उससे सीखा. वो दुकान इतनी चली नहीं. फिर हमने एक दूसरी दुकान करी गोवा में कि हमने देखा कि उधर भी फेल होएगा तो चलेगा. तो उसके बाद इच्छा हुई कि और कुछ किया जाए गारमेंट में. वैसे फिर शर्ट के ब्रांड बनाए, फिर जीन्स का ब्रांड बनाया. जॉन मिलर एक शर्ट का ब्रांड बनाया जी. जीन्स का एक ब्रांड बना बेयर. वैसे फिर हमने बोला कि अपनी एक मेंस वेयर की दुकान बनाते हैं. पैंतलून शॉप करके दुकानें चालू की हम लोगों ने. वो दुकानें भी ठीक चली. तो दुकानें में भीड़ आने लगी, तो हम बोले अब हमारे कस्टमर अब बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फैमिली स्टोर बनाते हैं. करेक्ट. उसी टाइम 97 में फिर वो पैंतलून्स करके हमने गरियाट में एक दुकान खोली. बड़ा स्टोर. वहाँ सेल लगाते थे तो बहुत भीड़ हुई. तो हमने बोला अब इतनी भीड़ होती है तो परमानेंट सेल की एक दुकान बनाते हैं. वैसे बिग बाजार की कल्पना हुई. ओके. तो जो भी चीज़ बना रहे थे चल रही थी, कस्टमर आ रहे थे जी. तो हमारे को लगा अब कस्टमर के वॉलेट में जितना पैसा है उसको अपने यहाँ उसमें खर्चा मेरा होना शेयर चाहिए. कितना? उसमें शेयर कितने आवे. तो हम लोगों ने बहुत बिजनेसेस किए. जी. फाइनेंशियल सर्विसेज में आए, एंटरटेनमेंट के बिजनेस में सिनेमा बनाए, फिर सैलून्स बनाए, जिम्स बनाए, मतलब रेस्टोरेंट के बिजनेस किए. मतलब हर जहाँ पे भी स्पेंड होती थी हमने बोला कि कुछ करेंगे. तो ये कर करके काफ़ी कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें अनसक्सेसफुल रही. तो एक कोर था फूड फैशन एंड होम. फूड फैशन एंड होम ओके. 3 कैटेगरी में हम लोगों ने काफ़ी ब्रांड्स बनाए और काफ़ी फॉर्मेट्स बनाए. तो ये तीनों कैटेगरीज कंज्यूमर, उसकी फैमिली, उसकी साइकी से बड़ी क्लोजली जुड़ी हुई है. बिल्कुल. तो इसमें एक्सेल करना तो मतलब उसकी एक भीनी जो ज़रूरतें हैं उसका भी भाप लेना. तो ये कैसे, मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू अंडरस्टैंड इतनी इंट्रिकेसीज इंडियन कंज्यूमर की, जो कि हर 100 किलोमीटर बाद बदल जाती है? तो फैब्रिक समझ थी, गारमेंट की समझ हो गई थी, फिर ब्रांडिंग की समझ, शौक था एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग का, तो ब्रांडिंग की समझ थी जी. तो ये कर करके फैशन का बिजनेस तो हम सीख लिए. फूड का बिजनेस सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि फूड इज़ अ डिफ़िकल्ट बिजनेस इन अ सेंस के. बट लगता है सबसे ईजी है, बट है डिफ़िकल्ट क्योंकि उसमें
मार्जिन का प्ले नहीं रहता है इतना जी। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत कल्पना की फूड बिजनेस की मतलब हर शहर में घूमे सोर्सिंग सेंटर्स बनाए हमने 42 ऑल ओवर इंडिया कहाँ से क्या सोर्स कर सकते हैं फिर फूड प्रोसेसिंग की एक पूरी फूड पार्क लगाए ब्रांड्स बनाने लगे फूड में ओके तो उसमें भी सक्सेस मिला हम लोगों ने ब्रांड बनाया टेस्टी ट्रीट बनाया गोल्डन हार्वेस्ट करके ब्रांड बनाया तो वैसे काफ़ी मतलब फूड को सीखने के लिए मैंने देखा कि पूरी वैल्यू चेन मैनेज करेंगे तो ही फूड का बिजनेस सक्सेसफुल होगा तभी मार्जिन्स निकलेंगे तभी तभी कुछ समझ आएगा द प्ले होगा कुछ मार्जिन्स का तो हम लोगों ने एंड टू एंड बड़ा प्ले बनाया उसको किसी से उठा के सामने रख देने से मार्जिन्स नहीं है वो पैकेजिंग करने का मार्जिन नहीं है यू हैव टू गो टू द सोर्स ओरिजिन Yes. प्रोसेस इट डू सम वैल्यू एडिशन ब्रांड बनाए और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था तो ये कर करके फूड का बिजनेस सीखे होम का बिजनेस भी इलेक्ट्रॉनिक्स था फर्नीचर था जी और जनरल मर्चेंडाइज था हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे जनरल मर्चेंडाइज में जी इंडिया का लगेज का 15% सेल हमारी दुकानों से होता था जनरल ट्रेड पूरे इंडिया का पूरा मॉडर्न ट्रेड मिला के वाह तो वैसे करके काफ़ी कैटेगरी में हम लोगों का शेयर 8-10% था हम लोग ने काफ़ी नई चीज़ें मार्केट में दी उस टाइम पे तो ये एक्सपेरिमेंटेशन जो आपने किया सर तो मुझे भी याद है जैसे हम लोग मेडिकल आईआईटी वगैरह करते थे सबसे पहले मेडिकल 20 साल वही करते रहे बच्चों को पढ़ाते रहे तो जब आईआईटी में जाने की बारी आती थी तो एक नई चीज़ थी एक्सपेरिमेंट करते डर लगता था तो आपने इतने एक्सपेरिमेंट कभी डर नहीं लगा कि भाई चलेगा नहीं चलेगा कैसे करेंगे सो हाउ डिड यू लोअर दी प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू ब्रांड आई थिंक उस टाइम डर नहीं था टू बी ऑनेस्ट ओके क्योंकि पहले अब एक डर मिटाने के लिए मैंने कुछ किया था पहले गोवा में एक दुकान बनाई थी पेंटलून शॉप जी वो चली नहीं तो उसे सीख लिए जब हमने पेंटलून्स खोला तो हमने बोला कि कौन से शहर में खोलें तो सबसे पहले कलकत्ता हमने सोचा कि मेट्रो में खोलना है ओके तो अगर कलकत्ता में थोड़ा फेल होगा तो ऑल ओवर इंडिया आवाज़ नहीं आएगी मतलब एक साइलो दूर होगा किसी को साइलो पता भी दूर नहीं होगा चलेगा तो यू सी दैट बट उसमें सीखने को मिल जाता है सब कुछ सीखने को मिल इट वॉज लाइक अ प्रोटोटाइपिंग बट कलकत्ता में रिस्पांस बहुत अच्छा रहा हम लोगों ने एक्चुअली जितना फॉर्मल कलकत्ता के बारे में जो समझा था कि कलकत्ता इज अ सेरिब्रल सिटी वहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअल है तो हमारा ऐड भी वही था व्हाट कलकत्ता थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो वैसे करके पेंटलून्स का लॉन्च हुआ वहाँ पे हम लोगों ने 400 गेस्ट फ्लो इन किए थे बॉम्बे से और 4000 लोगों की पार्टी रखी थी कलकत्ता में क्योंकि कलकत्ता में बात करने के लोगों को बहुत मजा आता है तो आई थिंक वी पॉपुलराइज्ड द ब्रांड इन कलकत्ता क्वाइट अ लॉट तो ये इनसाइट्स कैसे आते थे आपको कि ये मार्केट ऐसा बिहेव करती है हम लोग बसते थे वो शहर में जाके अच्छा मतलब स्टोर घर ले लेते थे 30-30 दिन रहते थे वहाँ पे अच्छा ये लोग भी घर और दुकान में आए हुए हैं माल वाल लगाए हुए हाथों से सब काम किए हुए हैं Summer holidays were spent typically on the outside of the store. Summer holidays was outside of the store. Yeah, typically. तो हर शहर में घर लेके रहना फैमिली आ जाती थी साथ में रहने को एंड सीखते थे हर शहर में एवरीडे रात को किसी के घर में जाना मिलना उसकी सोसाइटी को समझना वो कम्युनिटी को समझना तो आज भी हम लोग वही काम करते हैं एक हमारी एक कंपनी है जो भारत दर्शन करती है हर 6 महीने में अच्छा और जाके छोटे छोटे शहरों में रहती है और जो भी सोसाइटी में चेंज होती है वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग आज तक जितने लिरिक्स लिखे हुए हैं एनीथिंग व्हिच बिकम्स पॉपुलर हम लोग आज रिकॉर्ड करते हैं आज भी तो ईयर टू द ग्राउंड इवन एट द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेस तो वो आपको पता चलता रहता है कि कहाँ मूवमेंट हो रही है क्या ट्रेंड आ रहे हैं सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो ट्रैक रखते हैं हम लोग एंड दैट कोशिश करते हैं क्या उसको हम एक सक्सेस या सीक्रेट सॉस का नाम दे सकते हैं आपके लिए सभी को करना पड़ता है बिजनेस में बट मैंने कई बार देखा है कि लोग इतना फंड्स रेज कर लेते हैं एंड सडनली उनको लगता है कि बस हम सब चीजें खरीद लेंगे उन लोग काफी लोगों का इंस्पिरेशन रहता है कि वेस्ट में चला तो शायद यहाँ चलेगा हाँ अमेरिका को काफी इमुलेट करते हैं काफी इमुलेट भाई इंडिया एक बहुत अलग कंट्री है इंडिया में 6400 कास्ट एंड सब कास्ट है 7 मेजर रिलीजन है 72 मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हर फेस्टिवल का कंजम्पशन का पैटर्न अलग है तो इंडिया एक प्रॉब्ली द मोस्ट हेट्रोजेनस कंट्री इन द होल वर्ल्ड है इसकी अपनी नुआंसेस है देयर आर कस्टमर्स लाइक अमेरिका ऑल्सो बट दैट वुड बी X% ऑफ पॉपुलेशन वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आई एग्री विद यू और जैसा आपने कहा कि समर वेकेशंस वर एट द स्टोर मुझे भी याद है हमारी समर वेकेशन होती थी कि भाई अभी ये एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ रही है तो तुम लोग घर बैठो जब ये एग्जाम निकल जाएगा फिर बात करेंगे सो यू नो द फैमिली बिजनेस का इन्फ्लुएंस ऑन द फैमिली इटसेल्फ एंड हाउ द फैमिली लिव्स एंड ग्रोज एंड मूव्स अराउंड एंड लर्न्स इज सो हाई उस टाइम तो अंधों में काना राजा थे मतलब सभी लोग सीख रहे थे कोई भी मॉडल नहीं था कोई रेफरेंस नहीं था
हमने कोई बड़ी दुकानें वर्ल्ड में जाके देखी नहीं थी कैसे काम होता है, तो कर करके सीख रहे थे। एंड डाइनिंग टेबल पे भी चर्चा वही होती थी। I think we were fortunate that it is a consumer business, and because we are all consumers in some way, it's easy to relate. It came more naturally relatable. But मजा तो तब आता था when we used to travel to different cities, stay there, visit people, go to the markets and the bazaars. There was always this question ki what is the rice and the oil that this community eats versus the other. Correct. So those were natural consumer conversations. And how often was it like completely contrary to your belief कि आप इस belief से गए इस market में, and it was like oh no, ये तो बिल्कुल अलग है. To be honest, वो beliefs ही नहीं थे, तो we were learning very raw. We were honestly learning as it would come. But I would say आज भी वही है. इंडिया इतना फास्ट बदलता है कि if you are not in touch, you are not relevant. You're out of game. You are totally out of the game. You are totally irrelevant. Consumer business, the past has very little to do with the future necessarily. खाली commodity business में okay, the past has a future, but value added चीजों में I don't think so. तो value के मायने ही बदलते रहते हैं. बिल्कुल. तो आपकी शुरुआत आशनी कैसे हुई? मतलब for me personally it was very difficult to fill boots of a extremely successful entrepreneur, first gen, and everybody is looking into कि ये आके क्या करेगा business में, let's watch it. So how was your entry into? So the way I saw it was actually a lot of the business was being built as I was growing up. So it was almost like a sibling relationship for me. It was like one more child that was being nurtured, taken care of. All the businesses, all the formats were being built in front of my eyes, in some sense. So I felt very much as a part of the journey. I didn't feel like I had to fill into anyone's shoes. I felt like it was the same shoe to a large extent. Like I said, because it was a consumer business and because I was a woman, I had an added advantage. Very few people have that advantage as well. So I had that added advantage. It was a joint family. Some members of the family were in the business. One of the things that he did for me, which I think was the best thing, was he never let me or my sister study business. So he said, don't study business. बिल्कुल. You are going to join business, but don't study business. Actually, वो join कर रहे थे नहीं कर रहे थे मालूम नहीं था, because it was so organic. Seamless. It was so seamless. Okay. So I studied design, for example. When I was growing up, हमारे घर में, like, he had these friends, family, they became like family. These designers who used to always come, we were discussing layouts, looks, logos, दुकान कैसे दिखेगी, what will the first impression be, what is the emotion we want to evoke. So those were the strong memories that I had when I was growing up. So you know, it so happened that I went to study design. As I studied design, he said, it's about generalization and not specialization. There was a new belief that was given. So I was actually trying to see what I could specialize in, and luckily the design school I went to was a very liberal arts oriented design school. So it became very easy to get liberal arts educated, because he said, always keep your eyes and ears open. The rest you'll learn. I only learned later in hindsight that it is very true. So I studied and I graduated in textile design. Of course, I went to Parsons to study for a summer. I went to the Stanford School of Business to study. And that was all great because it was exposure more than anything else. Any frameworks to learn. Any frameworks to learn per se. And when I came back, I was like, okay, now what? So at that time, there was a small division called the Innovation and Incubation Group within that was being created. Okay. And we were building many specialty retail formats at that point. Within 1 year of launching some of these, we hit recession. And we realized that we had to close down many of these. So within the very first year, I could see how creation, and then how you also have to reconcile to your creation to a large extent. So बहुत मजा आया, because actually what we were fundamentally doing was working with customers and understanding customers at the core. One of the few exercises that we used to do then, and we continue to do now, is we study how India actually consumes in its communities. So he mentioned that there are multiple caste, subcaste and groups, right? So we also understood India in various ethnic linguistic communities. So we studied 13 communities every year. We studied their panchang, unka calendar banate the, to understand what are the high points of their consumption, what will be the low points of their consumption, which days do they eat something, not eat something, what are their wedding days, their auspicious days, their so-called inauspicious days,
in doing that, actually, I became very close to the Indian consumer and fundamentally started relating and connecting very well to the Indian consumer. That became my biggest advantage and strength, if you ask me. That was the fun. So what I had learned in childhood, I was officially getting nurtured and doing more of that at that point. Of course, later I joined and we created Future Consumer, which became our food and FMCG business, where a lot of these things were applied. So this was the knowledge around how this whole industry and consumerism in India works, and you were getting those insights, and it was all setting in your mind. Yeah. What were you learning from his work style? I think his work style... Every successful entrepreneur has this unique style of working, I have to come back here. She recently studied. She's studying Shakespeare. And she came down to me, and one thing which she said, every entrepreneur, every character in Shakespeare has a tragic flaw. Tragic flaw. And उसके कारण ही वो उसका जो भी problem होती है वो होती है. So then we it went is that through one flaw that can cause your undoing, basically. Correct. In fact, so she realized what are the flaws in me. because we went through a destruction. So what was that flaw? And now we have started analyzing flaws of every entrepreneur, every individual, every successful person. कहीं ना कहीं हर एक में कुछ ना कुछ flaw. नहीं, flaw दिखता है, but that doesn't mean whether that flaw will undo him. But कभी ना कभी हो सकता है. वो आएगा. Okay, that is very interesting. So that theory of flaw, I think, is an interesting theory one should learn about in entrepreneurship. So, but how would you define his unique working style, and how did that inspire you or change you? So I think he has a pulse of India and Indian consumers. And Indian society, actually, very, very, it's in his nerve. Like, it is in his nerve, and like, he's very instinctively, he's a learner. Like, he'll grasp. If you ask me about the digital consumer today, he'll be more excited about the digital consumer today than I would intuitively understand, even though I'm so much more younger and so much more native to the medium per se. But he is an instinctive learner, and he implements as he learns. It is his style, which is he implements and he learns. We unfortunately are baggaged because of the way they do it, and we sometimes overthink and we do. So my style is that of processing and then doing, and his style is to do and learn, and learn to a large extent. So wo hai. But the one thing that remains common irrespective of everything is we can have a philosophical or an intellectual conversation on any subject, right? So whether it is the tragic flaws of entrepreneurs, or whether it is the last movie we saw, or a consumer trend we spotted at the airport, or anything like that, that is part of our everyday conversations, and our everyday discussions are always around those things, for example. So like today we have been in a flight coming to Delhi. Yeah. So our observation, she has launched a brand on children's furniture, and उसका extension कर रहे हैं, luggage करना है. So we were all observing the children's luggage. लोग क्या लेके जा रहे हैं, कैसे ले रहे हैं. What we should not do. What we should not do. Largely. It's not about what is happening in the market. It's not what we have to do in any case. Yeah, वो तो हो ही रहा है, मिल रहा है. तो लोग उसको छोड़ के हमारे पास क्यों आएंगे? तो हम लोगों ने वो एक ट्रेंड पकड़ लिया आज पकड़ा. तो इतना जो आपने इस कंज्यूमर को समझा, क्या आपको लगता है जो न्यू एज ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपटीशन आया है जिसने पूरे रिटेल को एक रिजिक किया है, इज इट हियर टू स्टे? उससे व्हाट हैज बीन योर लर्निंग, व्हाट वर द इश्यूज दैट यू फेल्ट द कंपनी कुड नॉट असेस, मतलब वो सोच नहीं पाई या लड़ नहीं पाई, वो क्या था, मतलब व्हाई डिड इट ऑल हैपन? No, I think we were a product of the physical world. Yes. And we went from the commodity world to value-added world, wherein we build brands. जी. Whether it was retail experience brands or it was product brands. तो हमारी दुनिया वो थी. ऑनलाइन की दुनिया एक अलग दुनिया है. ऑनलाइन की दुनिया आई है, एंड उसमें मेजर बदलाव आया जब मोबाइल फोन बिकेम इम्पोर्टेंट. व्हेन अ डोमिनेंट मीडियम चेंजेस एंड सोशल मीडिया के आने से एंड द होल डिजिटल वर्ल्ड, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया. इफ यू रिमेंबर फ्यूचर बाजार वी स्टार्टेड व्हेन फ्लिपकार्ट स्टार्टेड, बट वी वर पुटिंग अ डिजिटल लेयर अबव अ फिजिकल लेयर. हमारी सोच डिजिटल नहीं थी, हमारी सोच फिजिकल थी, माइंडसेट फिजिकल था. हम डिजिटल वर्ल्ड में फिजिकल की दुनिया को लेके जा रहे थे कि उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं.
आई थिंक इंडिया में आई बिलीव दैट जो पहले राउंड में जो भी सक्सेसफुल है ई कॉमर्स या जो भी था, इट वाज मोर अबाउट फंडिंग देन एनी अदर आइडिया। कंज्यूमर बड़े सालों से दशकों से लगे हुए थे एक ही तरीके से, था ही नहीं उसके बाद, तो वो थोड़े से उधर से एक्साइट हो गए बस। लाइक आई थिंक द बिगेस्ट आइडिया वी केम वाज बिग बाजार डायरेक्ट। आई थिंक इट वाज अ वेरी स्ट्रांग आइडिया। ओके, हम लोग फ्रेंचाइज बनाते थे, एक आईपैड देते थे और आप ये माल बेचिए। हैड वी वर वी एबल टू सेल एट द प्राइस एट व्हाट अदर्स वर सेलिंग बिकॉज दे वर फंडेड? नो, एंड दैट वाज द आइडिया, दैट वाज द आइडिया डिडंट वर्क, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज। आई थिंक वी क्रिएटेड अ मल्टी लेवल मार्केटिंग काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, एंड दिस builds the entrepreneurship at the local ground। At the कि local भाई आपके ground। पास आईपैड है, हम लोगों ने आपके पास कंज्यूमर है, आप सेलेक्ट कराइए और हम पहुंचाएंगे। हमने बहुत किया, बट अल्टीमेटली प्राइसिंग का बड़ा चैलेंज आया कि वी वर नॉट एबल टू मैच द प्राइसेस। करेक्ट, एंड ये लोग तो 100 रुपए की चीज 80 में बेच रहे थे। तो इंडिया में कोई लॉ नहीं था प्राइसिंग के ऊपर। अब है, अब कोई ऐसा? अब भी नहीं है, अब भी नहीं है। तो काफी कंट्रीज में लॉ है कि बिलो योर परचेज प्राइस यू कांट सेल, और इफ यू कैन सेल ओनली वंस अ ईयर। तो सब कंट्रियों के अपने अपने लॉ है। इंडिया में वो लॉ नहीं था, तो दैट अलाउड लॉट ऑफ पीपल टू कम इन एंड बर्न मनी एंड एलिमिनेट फ्यू पीपल। एंड आपको लगता है कि इस तरह के लॉ आने से कुछ गेम चेंज होती है या आगे होगी? गवर्नमेंट अलग वे से सोचती है। गवर्नमेंट सोचती है कि कस्टमर को फायदा हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? डेमोक्रेसी है, कंज्यूमर इज द किंग। अगर वो उसको नुकसान करना है करने दो, बट देन वो कैपिटल का प्ले हो गया। कैपिटल का प्ले है, तो राइट और रॉन्ग नहीं है इसमें। वी कांट से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आपकी इस बात पे मैं बार बार मेरे फादर से मेरा डिस्कशन होता था, मैं इनको यही कहता था कि भाई अगर एक एम्प्लॉय को कहीं दिक्कत आ जाती है या कहीं मतलब स्लो डाउन है, उसकी जॉब चली जाती है, तो उसके पास बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं वो खटखटा सकता है। लेबर लॉ है, ESI है, PF है, कि चलो मेरा फ्यूचर कुछ टाइम के लिए सिक्योर है। मैंने जब एक एंटरप्रेन्योर पे दिक्कत आती है, विपदा आती है, तो सरकार पूरे हाथ खींच लेती है। अभी आप सालों से टैक्स देते आ रहे हो, लेकिन जब आप पे विपदा आई है तो कोई सामने नहीं आता। तो ये एक डिलेमा है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। आई डोंट एग्री हियर। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता? no, हमें तो लगता था कि भाई अगर हम कहीं फंसे तो कोई नहीं आएगा मदद करने का। मतलब ही वही है ना। नहीं, वो तो है, लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर लाखों हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है, बट गवर्नमेंट का काम है एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें आप परफॉर्म करो। एंड वी वर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। करेक्ट। लिबरलाइजेशन के बाद में उन्नति हो रही थी, देश की प्रगति हो रही थी, नई नई प्रोडक्ट्स आ रहे थे, नई नई चीजें आ रही थी। वी बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। देन ई कॉमर्स केम इन एंड दैट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ, वी वर नॉट एबल टू गेट फंडिंग। हमारे FDI अलाउड नहीं था, रिटेल में अलाउड नहीं था, एंड पीपल केम इन विद अदर क्रेजी लेवल ऑफ फंडिंग। या आई रिमेंबर दोस बैक टू बैक एड्स एंड टीवी कैंपेन्स। एनीबडी कैन सेल एट दैट प्राइस। So those who were well funded survived. Those who were not well funded didn't survive. It was not the idea. It was all about an entrepreneur able to raise money. तो वो यूफोरिया आपको लगता है चला गया अभी या अभी भी है? वो हमेशा रहेगा। वो रहेगा। तो एक बड़ा प्लेयर आएगा। In this digital world, people who raise money is the last man standing. People who raise money is the last man standing. Yeah. And they are now getting smarter and smarter. If you look at entrepreneurs, today's entrepreneurs, जो भी successful entrepreneur है digital world में, you will see a pattern. Their ability to raise money. तो product quality, consumer satisfaction, that is given. अच्छा, मतलब वो hygiene है। वो hygiene है। जिसके पास वो है और raise कर सकता है। The most successful entrepreneur, you name all of them. I have met all of them, and their special qualities, they are able to raise money. The storytellers. The storytellers who can spellbound the investors. Yes, totally. Yes. But वो भी एक कला है, वो भी एक skill set है. Besides the business skill set which they have to have. जो हो रहा है वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है या ये एक गलत कंज्यूमरिज्म में या गलत एंटरप्रेन्योर सेटअप? आई थिंक गलत सही मैं कभी नहीं मानता हूँ कि होता है। इट्स अ जर्नी व्हिच वी ऑल हैव टू गो थ्रू, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड विद द न्यू जर्नी। यू आर वेरी एक्साइटेड? वेरी वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इंडिया में जो टैलेंट है, जो चीज़ें हो रही है, और आई वाज जस्ट विद समबडी इन द फ्लाइट एंड शार्क टैंक की डिस्कशन हो रही थी कि 1,20,000 एप्लीकेशन आती है, उसमें से फिर 500-600 बचती है, फिर उसमें से 250 निकलता है। मतलब इट्स, आई थिंक दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रेजी द वे द प्रोग्राम हैज बीन एक्सेप्टेड वेल। तो कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा हो रही है। तो लोगों में वो जो एक हिचक थी अपना काम शुरू करने की, वो आपको लगता है इस तरह के सक्सेस स्टोरी से या प्रोग्राम से या मीडिया मार्केटिंग से आप लोगों को एटलीस्ट वो हिचक हट गई? बिल्कुल, एंड स्पेशली इट्स कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स नाउ। आई थिंक शॉर्टेजेस और कंस्ट्रेंट से ही कुछ चीज़ें बनती हैं। यहाँ तो लोग कंफर्ट जोन में हैं, तो दे नेवर फील द नीड दैट हमें इससे बाहर निकलना भी है, जो है ठीक है। तो यहाँ के लोग अलग कुछ करते हैं, वहाँ के लोग नई नई चीज़ें बना रहे हैं। आपको फ्यूचर ऑफ इंडियन रिटेल शॉप ऑफलाइन, उसके बारे में क्या लगता है? आई थिंक
वो रहेगा. ऑनलाइन कैन केटर टू एक्स नंबर ऑफ पीपल ओनली, उसके बाद ऑफलाइन में आना ही पड़ता है, बट आपकी सोच डिजिटल लानी जरूरी हो गई अब. बट व्हाट डज टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन? टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन स्पीड, टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन स्पेस को रिड्यूस करता है, टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट सोशल इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर वन ऑन वन. तो टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन रोल टू प्ले नाउ. जो ये सारा एक्सपीरियंस है, अब मैं देख रहा हूँ कि you started Think9, and how's that journey shaping up for you, and what are the lessons, what are the experiences, and what are the new layers that you're adding with your experience on Think9? So Think9 is conceptually very different. I think he spoke a little bit about how everyone has to be a digital first thinker. A fundamental understanding and insight on which Think9 is born is the fact that mass media is over. Fundamentally, it is the time for one-on-one conversations, and the phone has become the primary mode through which you receive and you communicate. Absolutely. Now, on this phone, it's through social media, the Googles, Facebooks of the world that are driving your social interactions today. We actually, in some ways, feel that we were blessed because we were naturally forced to move into this digital zone and this digital way of being and thinking. Many different things that we've learned here. Our first understanding is that today's Indian consumers, the ones who we want to speak to digitally, and we are building brands and ventures for them digitally, we want to work with the premium most India. We want to work with the top 10% of India, top 8 to 10%. So that is clear. You've found your niche, your segment is clear. Yes. We are again focusing on categories that we know and understand best, which is food, fashion, beauty and wellness. Beauty and wellness. These are categories we have all experienced and done in the past, and that's what we're doing. In the venture building model, what is very, very exciting and continues to remain exciting is the fact that we are building these ventures ground up. And they're not built on capital, like he said, but fundamentally it's built on a consumer insight and the understanding how a brand can be built. How do you find a niche? How do you find a new way of looking at that same category and building a brand around it? So I'll give you an example. We built a brand called Kingdom of White. Kingdom of White is a brand that sells men's white. We started with shirts, now we are doing bottoms. We will expand into many more categories. Our learning and insight said that as you premiumize, actually, the number of white you own goes up. Less becomes more as you premiumize. 23% of a man's wardrobe becomes white as they climb up the ladder. So we said, why not build a brand? There is no brand in India that only does white. Sure, there's Ramraj. I would have thought in the other way, black. No, isn't that a more premium statement? Black is more evening. Black is only evening. Like white is day, and you can use it at multiple. And the other thing we realized was that the idea of masculinity has changed, right? First, the idea of white was politicians wear white. You wear white in a boardroom. Today, airport looks have white, right? It's about that ease, confidence. You look at resort looks, they all have white. So today, white is a color of freedom, individuality, expression. And that's the way we wanted to represent white. We wanted to paint a new sort of a canvas with white. So that's how Kingdom of White as an idea was born. I think he mentioned a little bit about Smartsters. Smartsters was born with the understanding that 2.5 crore kids are born every year. If I take the premium most end, it is the most way in which we all pamper our kids by doing anything and everything we can for the kid. You know this best. I mean, education is where it fundamentally begins at large. So we said, why not build a brand for kids' furniture and decor? While they're spending so much money on education, on schooling, and on many other experiences around the child, nutrition, etc., the home is often neglected. And we thought that it's a great opportunity to build a home furniture and decor brand which is designed for childhood, which is designed understanding child developmental factors primarily. So it's a very interesting new idea, like how pets have become such a dominant part of our life. Yeah, and mostly we see student-centric or child-centric furniture is essentially limited to education institute like play schools or school. Beyond that, at home, we don't feel the need, jo ghar mein pada hai furniture, just accommodate in that. Now we've designed study tables which are meant for children's development, the way in which they study is understood. Especially after COVID. Yes, spending more time. Exactly. And ergonomics. And now children spend a lot of time indoors as well. So how do you understand that? So Think9 has been a very interesting journey. We are learning more about the digital medium. We are learning every day about it, but we've built around 12 ventures in this. So these are your own ventures and you're enabling others who want to dig into your experience. Exactly. So
some of these we own and we operate ourselves, and then Okay. there are others which we incubate together, and we are like Okay. co-founders in these ventures. So it's a great model because you get to work with some very, very ripe ideas. Yeah. We learn hands-on on the ground, and these are ventures we literally create. It is the seed of an idea that is there in someone, and we work together to create a brand, and now we're taking it to its next level. So it's interesting, and one of the best things that we feel for ourselves in this is that we are learning digital. We've learned how to build our own website. We're learning how to sell on marketplace. And physical is our biggest strength, which today seems to be the challenge for many digital first brands and companies. So we are omni-channel from day zero. Okay. That's the way in which we've designed ourselves as well. So you have sort of CEOs for each of these businesses? We have brand leads, brand entrepreneurs. Or you have optimized some support functions? And we've optimized some support functions, and then we want the brand owner to focus on the customer, the product, and not worry about revenue, and not worry about hiring, finance. Absolutely. So we take care of some of those common services, and we enable the entrepreneur to succeed at what he knows best, which is the customer, the product, the category, and building business and revenue. Which is quite typical of the group company kind of a structure, which obviously you experience. When but this is a very different brands. I think what we can look at a reference point, this is a venture builder firm, so probably the first venture builder firm in the country. So it's a PE firm, but not PEs, but it's operating entrepreneurs who are building and ventures. We're giving intellectual capital rather than just the money. Just the money. पैसा तो है नहीं, तो intellectual capital पे काम करेंगे. पैसा है नहीं तो. So पैसा तो follow करता है sir intellectual excellence को, and it will happen. Yes. तो आपने this has been an inspiring story and it continues to build. एक legacy बनाई है. आप उसको क्या नाम या क्या शेप देना चाहेंगे उस लेगेसी को? एक्चुअली मैं लेगेसी में कभी बिलीव करता ही नहीं था, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ कि लेगेसी तो रहेगी नहीं, क्योंकि हमने जो भी क्रिएट किया वर्चुअली डिस्ट्रॉय हो गया. इनफैक्ट मेरी किताब भी जो मैंने लिखी थी 17-18 साल पहले, उसमें भी यही था, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, सेवा, मतलब तो डिस्ट्रक्शन के साथ के बाद ही क्रिएशन होता है. तो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. So whether this distraction can help us in create something is something which we are working upon. But I think it's a different legacy. It's not a legacy of a venture or an organization or an institution, but it's the legacy of values. It's the legacy of relationships. I think relationships. It's the legacy of. I mean, today if I have any question, I can go and he'll open 2 doors for me. Yeah. हम जैसे luggage की बात कर रहे थे. Like on Friday we learned something. Today we are building on it. We bring in the best entrepreneur in the country who's available to him. Just a phone call away. It's just a phone call away. And luckily, वो relationship ऐसी है कि people are willing to come to their office and talk to them. So, despite being a very small business, which is a great value add at any levels. Unbelievable. वो टाइप की relationship है कि लोग फिर भी help करना चाह रहे हैं. आपने डिस्ट्रक्शन की बात करी, तो आपके हिसाब से लाइफ एक रेस है जिसमें आपको जीतना है या कुछ अचीव करना है, या वो एक मंच है जहाँ पे आपको रोल अदा करके निकल जाना है? रोल अदा करना है. रोल अदा करना है. एक्चुअली हमारा, मेरे को हमेशा सक्सेस फॉर मी, विच अगेन आई रोट लॉन्ग टाइम बैक, इट्स नॉट नथिंग न्यू के ये सब होने के बाद मैं बोल रहा हूँ, वाज ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग विच मिलियंस एंजॉय. वाज ऑलवेज दैट वाज अ सक्सेस फैक्टर. अगर हम एक कोई नया फॉर्मेट बनाए, इट्स लाइक अ सिनेमा, यू मेक समथिंग, फ्राइडे फर्स्ट शो, लोग आए या नहीं आए, जो भी बिजनेसेस आप क्रिएट करते हो, कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड देता है, एंड वो रिस्पॉन्स जिस दिन अच्छा मिलता है उस दिन यू फील वेरी जॉयफुल. इस मंच पे इंसान के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं. एक टाइम पे हमारी स्टोरी भी थोड़ी सक्सेस में घूम रही थी, फिर अभी आजकल सिचुएशन थोड़ी हिली हुई है, जैसा अखबारों में पढ़ते रहते हैं. तो मेरे को कई बार लगता है कि सक्सेस जो है वो बहलाती है और फेलियर जो है वो सिखाती है. तो आपके हिसाब से जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, तो आई थिंक सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग. यस, वो आपको एक नशा देती है, बहलाती है, एंड इट्स लाइक अप्सरा एंड मेनका. In the new world, we call it like a dopamine, like it keeps hitting you. Like it keeps hitting, and you keep wanting it and you more. keep wanting it more and more. वो है उसका. फेलियर आई थिंक इंडिया में लोगों को डील करना नहीं आता है. नहीं आता है, सिखाया भी नहीं जाता, मुझे लगता है. सिखाया भी नहीं जाता. तो मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था जी, when we are going through so many things right now जी. and it's again, जब मैंने देखा कि मैंने बिजनेस सीखा तो किताबें पढ़ के सीखा जी. ये भी फेलियर से डील कर रहे हैं, तो आई एम डीलिंग विद फिलोसॉफी. आई बिकम अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसॉफी. वी आर डीलिंग थ्रू, मतलब अलग ही दुनिया, स्टोइसिज्म पढ़ के सीख रहा हूँ, एंड उससे सीख, मतलब फर्स्ट 6 महीने वाज अनबिलीवेबली डिफिकल्ट. अभी सीख रहे हैं, लर्न टू डील विद इट. एंड डिस्ट्रक्शन के साथ में कुछ नया क्रिएट करना, वो भी एक अपने आप में एक चीज़ है.
It's a commendable story and it's in the making, and I'm sure there is a lot that will get unraveled आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा आपकी फैमिली में, एंड यू नो टू आशनी's involvement, and you know you're one of the respected women business leaders in this country today. You take that to your advantage, or you feel that people took you to disadvantage on that? Actually, I've looked at it as an advantage. Like, I'll tell you about the family business as well, right? I mean, when we came in, there used to be a lunch table where we all used to eat. Very often people said, "ठीक है, आ गई आज, कल नहीं आएगी," you know. So it was very much like that. And how would you know that they're thinking like that? I mean, you can tell, right? They're like, "Oh, you're back here today," sort of a thing. So it's okay. And I think my biggest advantage was that I can and I always have been close to the Indian consumer. So that has been my biggest strength, I think, because we didn't study business. So कुछ करना था तो ये करते थे in some sense. So that's been good. I think the other reason why I think it's an advantage is because people expect very little out of you in some sense. So it's okay. You get your time and your pace to do it in the way you see yourself doing it. So would you go back to and say कि ये लोग ऐसा सोचते हैं, you know, these people are thinking like this? How I think वो दौर तो पार हो चुका ना. जब शुरुआत में when कोई भी लड़की I'm talking about the beginning when you were just getting about बिजनेस में आती है तो लोग बोलते हैं कि ओके अभी कुछ करने को और नहीं है तो ये बिजनेस में आई है. अच्छा. That's normally the take. And first woman of the in the family coming to business, so nobody takes seriously पहले महीनों कुछ दिन कुछ साल. When they see the performance on the ground तो सब चुप हो जाते हैं. But family that's natural. हाँ, that's natural, and you know it's not. शादी होएगी तो अभी फिर नहीं आएगी, फिर बच्चे होंगे तो नहीं आएंगे, तो that's the way woman has been. It's hard, and you have to fight so many battles at so many other orbits while performing, and then I think you know it should be a natural choice for a CEO because so much of resilience is not easy. You know, this is about coming in the business, and working in a family business is always tricky. नहीं, फैमिली में हमारे तो हर बिजनेसेस के सीईओ और होते थे, उन लोगों को भी सीरियसनेस नहीं आती थी ना. फैमिली में से कोई भी वुमन बिजनेस में आती तो nobody takes seriously in the beginning के तो. But I think you have to prove yourself, and I feel beyond a point gender will play no role in that. No role. In your work, gender has to play no or limited role. I don't agree there. I think gender plays a role in Indian businesses till now also. It plays a role. क्या role play करता है? Other people don't take seriously. Yeah, but your work has to prove it rather than your gender, right? You are there not because of your gender. You're there for your work. But are people patient to wait to see the work, or they just make opinion and judgments and then move on? People make judgments. I think as a society we are little more judgmental. We do make more judgments, but you have to work that much more harder, perhaps. World में इतने uncle aunts कहाँ होते हैं? इसके लिए. But I feel I was fortunate because even at the time of Future Consumer, it was a company, it was governed completely differently. We had an independent chairman. Yes. The chairman took it upon himself, and the board was grooming me almost. I think a lot of it was done because it was an independent board, it was an independent entity. So I almost thought that it was a platform given to me in blessing, you know, in some sense. So हो गया then. You prove yourself and so on. Once you are in, तो घर का माहौल कैसा, मतलब arguments मेरे तो बहुत होते थे, मतलब I would propose and he would dispose. इसे अच्छा है, नया है, but चलेगा नहीं. ऐसा देख तो लो. We have the opposite problem. He says अच्छा है, नया है, हम बोलते हैं चलेगा. Really? हमारे यहाँ exactly opposite है. हम उल्टा करते हैं, but he's way ahead in his thinking and in what he can foresee, he's way ahead. Okay. So often we have the opposite problem. And how do you resolve that? So I have a FOMO of being relevant. Okay. So once I realized the day, I think हमारे यहाँ we have a social commenter. He's been a colleague and a friend, Santosh Desai. He does a lot of work around Indian. He's a co-founder at Think9. He's a founder at Think9. Okay. उसने एक note लिखा था कि when a dominant medium of communication changes, everything changes around it. That note stuck on to me. Okay. And जब अभी आप देखेंगे मोबाइल फोन आपके, पहले रामायण होता था तो 50 लोग साथ में बैठ के देखते थे, सब एक ही टीवी में चिपक जाते थे. अब ये हो गया कि एक मोबाइल फोन, मतलब सबका ब्रेकफास्ट अलग, सबका डिनर अलग, सबकी थॉट्स अलग, सब लोग कंज्यूम अलग कंटेंट करते हैं, एंड द होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड. नाउ वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, फ्रॉम अ वर्ल्ड वेयरइन वी यूज्ड टू वॉच टेलीविजन टुगेदर. So this world is a very different world. इसका behavior अलग है, customer अलग है, सब कुछ अलग है. I have understood this medium and I keep on talking about this medium to them, how the consumers are becoming so individualistic. In fact, she used to write 10 memes every year. These are the top trending memes. She studied memetics as a subject.
Oh, is that a long time subject? back. It is a subject actually. It Wow. is a science. I didn't know It's that. not just It's a a full subject. It's a fledged science. science. It's a full fledged It was science. coined by Richard Dawkins हमने and तो पूरी किताब पढ़ी है मिमेटिक्स के ऊपर और uh, मिमेटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वी ब्रॉट इन And they can really get viral and absolutely. the And why do world some memes stick the and world's why do oldest meme others is not? the world's oldest meme is religion, And even before that is language. language. yes. So Gambling as a meme. Yeah, So it's come in new form. Everything comes in new form. So what we are seeing is everything is coming in a new form. Yeah. So nothing is changing. Human emotions जो no recorded है वही है. और जैसे म्यूजिक के 7 सुर है, कलर्स प्राइमरी 5 है, इमोशन से ही सब वही बनता दुनिया है, वही चल रही है. मोबाइल फोन ने आके सब बदलाव ले आए. मुझे याद है हमारे टाइम में शुरू में क्या होता था, अखबार में एक ऐड डाली, बिल्कुल है, और फोन की घंटी काउंट करो, योर लीड हम योर लीड कॉस्ट इज देयर. yes. अभी क्या हो गया, अखबार तो कोई देखता नहीं, बिल्कुल. अब तो टीवी भी देखना कम हो गया है. बिल्कुल. सो इट इज सो कॉम्प्लेक्स कि इंसान अगर मार्केट करे अपना ब्रांड तो कहाँ करे, कैसे करे और कितना बजटिंग करे. हम लोग एग्जैक्टली वही चीज से डील कर रहे हैं. हम तो, मेरे लिए तो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट ही वही है, Okay. और इन लोगों को एक्टिवेट करना है. And for us it's a live. If somebody can, But we have decoded this. it. Oh, you have decoded. We have decoded it in our thoughts Philosophical. and philosophically we have decoded it well. We have recorded it well, and we are doing it every day. I need a session outside of this discussion with you. तो all. बहुत अच्छा लगता है हमारे को ये सेशन का डिस्कशन करना, बिकॉज एक नई दुनिया बन रही है. बिल्कुल नई दुनिया बन रही है. I'll give you an example, and he brought about this thinking for us to imbibe and do. So at Think 9 every morning we actually study what are the top 10 Google trends. Okay. And based on that, we have started to develop content for that day that incorporates some of these trends and this understanding. I'll give you an example. He went to Indore and he went and ate a Kulhad Pizza. Okay. We have a brand called Sorrentina. Sorrentina is a premium brand that is trying Italian. that owns the Italian cuisine. Okay. He said Kulhad Pizza is a trending thing today. मतलब कुल्हड़ में वो सर्व करते हैं. कुल्हड़ में पिज्जा बनाते हैं और फिर बेक करते हैं. तो पिज्जा ही नहीं हुआ वो तो. बिल्कुल, thank you very much. But Kulhad pizza was the top trending thing on the even on Google. So we said, okay, now how do we make use of this trend but still remain true to our brand promise, which is Kulhad Pizza. Okay. So now we are devising ways and means in which we can communicate using the Kulhad Pizza. ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि सोरेंटिना प्योर इटालियन है और कुल्हड़ पिज्जा इटालियन नहीं है. Correct. So that's the kind of content we are going to be creating. But people are watching Kulhad Pizza as a trend. Oh wow. So these are things that we do on a live wired basis, and this is what excites us today. मायने ही बदल रहे हैं, definitions are being redefined. तो इंडियन कंज्यूमर को समझना is becoming even more complex. तो उसमें बिजनेस, आज आदमी ब्रांड बनाए तो कैसे बनाए? ब्रांड छोटे बनेंगे, छोटे बनेंगे. तो ये मदर ब्रांड्स वाला जो जमाना था वो नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल नहीं है. Unless we decode, as you said. Unless you decode, take a brand to a certain level, then expand the brand and open it up fully and get them into wide distribution. But you can't start thinking in a bigger way. So there is no medium you can make it big now. Correct. आप कितना IPL कर लोगे, कितना वर्ल्ड कप का, मतलब मास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत कम रह गए. राइट. तो ब्रांड्स बिल्ड कैसे होंगे? एंड इट इज तो बिकमिंग छोटे ब्रांड बिल्ड होंगे आपके टारगेट ग्रुप्स के बेसिस पे, फिर वो एक लेवल तक पहुंच के उसके बाद आपको उसको खोलना पड़ेगा. ये तो एक ब्रांडिंग की बात है. कंज्यूमर के सेंटिमेंट में कोई चेंज आ रहा है? कंज्यूमर बोलता है कि मतलब उसको इंडियन चाहिए. मैं मेरे पिताजी वाला ब्रांड नहीं लूंगा टुडे. ये जो ज़िलेनियल्स हैं, या बिल्कुल 2000 and above, बिल्कुल क्यों ऑड लगता है, बुरा लगता है पिताजी वाला ब्रांड? बहुत ज्यादा बुरा लगता है. ओके, दैट इज I इंटरेस्टिंग. think there are new values that younger generation relates to. Are they misplaced, those values? No, Or they are new, I'm they are not different? judging it as You can't judge. How can I judge But it? it's new, it's different. It's new, और हर चीज right But why होती है. hatred with the old? हेट्रेड कहाँ है? I आप think कह रहे हो पिताजी वाला तो हाथ मन ही में नहीं. है, वो बोलते थोड़ा है ना. अच्छा. I think it's a quiet rejection. Today It's today you accept your parent, नहीं तो पैसा कौन देगा? फंडिंग तो वहीं से आएगी. फंडिंग वहीं से आनी है. जैसे हमारे यहाँ कहते थे भाई कंज्यूम बच्चा करेगा लेकिन कस्टमर पेरेंट पैसा है. तो वो देंगे. पैसा वहां से आएगा, पढ़ेंगे आप. अब तुम्हें दोनों को खुश रखना है. दोनों को खुश रखना है. I think I was born in a economy where we had scarcity of everything. They have been born in an abundant economy. इनके बच्चे, now she is the 8-year-old child. When she saw a newspaper for the first time, she was pressing the photograph here. Oh wow. So She's trying to touch it. Like flip it and touch it. Yeah. So अलग दुनिया है. And I remember
हमारे बच्चे भी जब पहले वाले जो लैपटॉप्स आते थे उनमें तो टच नहीं होता था, बिल्कुल आपने कंप्यूटर खोला वो उस पे ही उंगली मार रहे हैं, Yeah, बिकॉज एवरीथिंग इज the surface is meant to respond. surface meant to respond in their world. तो उनकी एक्सप्रेशन सरफेस की अलग है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस इज वेरी डिफरेंट है। प्राइवेट लेबल्स का और जेनरिक्स का बड़ा ज़माना है, तो आपको लगता है कि बिना ब्रांड बनाए एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना पॉसिबल है और उसमें ही चलते रहें, या ब्रांड ज़रूरी है? कमोडिटी में यू कैन प्ले विद अ प्राइवेट लेबल। ओके, ब्रांड का मतलब है कि आपको कुछ प्रीमियम मिलना कमोडिटी से, जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलना है। अगर वो प्रोडक्ट 400 में और कोई बेचता है, आप 800 में बेच सकते हो, तो आपका वो उस ब्रांड की वैल्यू है। तो दैट इज व्हाट ब्रांड गिव्स यू। दैट इज व्हाट ब्रांड गिव्स यू। ब्रांड इमोट्स विद यू, ब्रांड टॉक्स टू यू, ब्रांड मेक्स यू फील, आपके ईगो को मसाज करता है ब्रांड, एंड आपको लगता है मैंने खर्चा किया बट आई एम स्मार्टर। तो कई बार होता है कि आप ब्रांड बनाने में इतना खर्चा कर देते हैं, जब उसको रीप करने की बारी आती है, वो भी मार्केट बदल जाती है, वो भी रिस्क है। ब्रांड पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि खाली अंडर द रडार खेलते रहें? I think I am a believer of investing in a brand. How do I you think, see it while like, you're making so many yeah, brands? I think because we are talking to that premium India, right? I think over there is no way that you can succeed without building a brand. I think we all want signifiers, and a brand is fundamentally a signifier. And hopefully we'll build brands that signify and establish that sort of an identity for the person wearing it, consuming it. That's the way I see it, particularly. Brand is also about consistency. Brand is about Quality, Trust, relationship, consistent, quality, repeatability. repeatability. तो ब्रांड का रोल तो कम नहीं होगा। नहीं होगा। It will always command a premium, respect, absolutely, and repeatability and sort of certainty, जिसके लिए हर entrepreneur सोचता है कि अगला क्वार्टर कैसा दिखेगा। While we are doing all of this, ये augmented reality, virtual reality जैसी चीजें, are they a hoax or a trend, or do you think people will migrate to that kind of shopping experiences also? ऐसा होगा कभी? वर्चुअल रियलिटी में मैंने एक वैन गॉग का शो देखा, तो आई वॉज सो एक्साइटेड। हमने आके एक मीटिंग बुलाई, एक दो लोगों को वापस भेजा लंदन के, आप ये शो देख के आओ। अच्छा, ऐसा कुछ करना है। हाँ। तो आई बिलीव उसका एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। वैसे ब्रांड में है, एक्सपीरियंसेस में है, बट क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस इट हैज अ ग्रेट रोल। व्हेन आई फर्स्ट वोर अ ओकुलस एंड आई सॉ अ फिल्म ऑन एवरेस्ट, आई फेल्ट आई वाज देयर। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जो अमर चित्र कथा ब्रांड चलाती है, तो हमने बोला कि हम तो ओकुलस बना के पूरे रिलीजियस साइट्स का दर्शन लाइव करा देंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी की, कुछ लोगों को नज़दीक लाने में, बहुत कुछ करने में, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने में है। कौन करता है, कैसे करता है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। यू कांट वेयर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। करेक्ट। तो वो सब सॉल्व होगी। तो इन सब चीज़ों का, इन ट्रेंड्स का, इन पैटर्न्स का, जो कंज्यूमर्स की हेल्थ है उस पर काफ़ी चर्चा होती है। एंड व्हेन आई से हेल्थ, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल हेल्थ की बात करें, जो कि एक टैबू है, स्टिग्मा है, तो आपको लगता है कि वो I again don't agree with you. नहीं, I think human capacity is infinite. ओके, Unlimited है। तो अभी लोग ऐसा आज बोल क्यों रहे हैं? मतलब वो they are not able to understand. But human capacity आप पहले देखिए, I think our average lifespan when we got independence was less than 50 at that time. जी। Now it will be 72 plus. I think we are talking of 90 now. और इतने साल जियोगे तो कितना कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। तो और इतने प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बट आई थिंक देयर इज अ सॉल्यूशन कमिंग टू एवरीथिंग। I think human race is probably the most interesting race in terms of defining their capacity. And they say we've only studied 3% or something of the human brain, right? So हाँ, मतलब उतना यूज कर पाते हैं, we don't use more than that. Also only that much is understood by the scientists and so on. So human brain, जब AI की चर्चा होती है कि that will overpower a human being, मेरे को लगता है humans are much above। जो उसमें सोचने की शक्ति है, पैरेलल थिंकिंग की और सब कुछ की, वो नहीं है कहीं भी। और तो उसका जो इस्तेमाल है, आपको लग रहा है कि ठीक डायरेक्शन में हो रहा है आज की डेट में? सब कुछ ठीक है। Who will define what is wrong? तो एक्चुअली वही लोगों के जो एक्शंस हैं, हमेशा बात करेंगे, वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, कहने का काम ही है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप मीडिया की बात करें, तो लोग बात करते हैं, पहले तो एक मेन अखबार होता था, जर्नलिस्ट होता था, वो अपनी खबर निकालता था, वो रिसर्च करता था, जो भी था एडिटर उसको देखते थे। आज तो हर दूसरा बंदा एक जर्नलिस्ट और एडिटर है। वो अपने विचार पोस्ट कर रहा है और उस पर कमेंट भी ले रहा है, सब ले रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को चेंज कर रहा है, ब्रांड की डेफिनेशंस को बदल रहा है। बट वो नॉर्मलाइज हो जाता है थोड़े दिनों में। एक जब कोई एक
पर्टिकुलर थॉट चलता है लंबा, उसके कॉन्ट्रेरियन थॉट्स भी साथ साथ डेवलप होते हैं जी। जैसे अभी शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, काफी पॉपुलर होता है, शॉर्ट रील्स है ये, बट उसका लॉन्ग फॉर्म भी साथ साथ चालू हो गए, जो डिटेल आर्टिकल्स की जो बात कर डिटेल रहे हैं आर्टिकल्स आ रहे हैं डिटेल सब्जेक्ट पे, तो हर चीज का एक काउंटर ट्रेंड आता ही आता है हमेशा, कोई भी ट्रेंड के तो साथ इतनी बम्बार्डमेंट के बाद जैसे लोगों के पास समय कम है में। एक ब्रांड को रिकग्नाइज करने के लिए, उसकी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको लगता है कि ये लॉन्ग फॉर्म वाले फॉर्मेट्स से ब्रांड क्रिएट करना पॉसिबल होगा? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म इज एन इजी फॉर्म और सब लोग उसी के विक्टिम है आज। आई थिंक लॉन्ग फॉर्म इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिनेमा जो स्टोरी टेलिंग था, हाँ। 7 ही प्लॉट होते हैं मेन, उसमें कितनी फिल्में बन गई आज तक, हमेशा कुछ ना कुछ नया लगता है। when I started this 8 hour 10 hour 20 hour kind of storytelling, it's such fascinating. You can build characters like crazy, you can create depth in the character, customer start relating, तो everything brings in its own challenges। तो long form क्रिकेट का भी देखिए, अभी मैंने देखा, अभी आप देखा होगा क्रिकेट लाइक 5 days इज ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, दे आर एंजॉइंग। इनफैक्ट इस टाइम 50 ओवर्स का गेम भी अच्छा गया, इनफैक्ट 20 ओवर चल रहा है, वो इतना फैसिनेटिंग नहीं लग रहा है। तो आई वाज सरप्राइज कि 50 आवर 8-8 घंटे की गेम में लोग बैठे हैं और 5-5 करोड़ लाइव, मतलब नाउ तो दिखता भी है नंबर, पीपल आर वाचिंग सिटिंग एट होम। इट वर्कड and there is a T20 series going on that is not so exciting as what 50 over was। मतलब जैसे आजकल तो हमें तो रिलीजन में बिलीव था, आजकल बच्चे बिलीव करने लगे जो कि पहले नहीं करते थे। बहुत ज्यादा हो रहा है बिलीव। तो मुझे वो भी कई बार, मतलब इतने अजीब ट्रेंड्स आ रहे हैं सामने, तो कंज्यूमर को समझना इतना मुश्किल हो रहा है। बट दे आर ऑल देयर, कुछ चीजें बढ़ जाती है, कुछ चीजें कम हो जाती है। ट्रेंड्स, द लेफ्ट इज थिंकिंग, द राइट इज थिंकिंग, द सेंट्रिस्ट, कोई बढ़ता है कोई कम होता है जी। वो थिंकिंग तो वही 3 टाइप की है। तो आपके एक्सपीरियंस में रिटेल में इतनी डेप्थ में, मतलब यू गो एन एब्सोल्युटली सुपर एक्स्ट्रा माइल टू अंडरस्टैंड द साइकी, तो इतने डेप्थ में आज जो नए वेंचर्स खड़े हो रहे हैं, क्या वो डेप्थ पे जा रहे हैं? क्योंकि अगर वो डेप्थ पे नहीं गए और उन्होंने बिजनेसेस खड़े कर दिए, अभी तो जो भी हमने सक्सेसफुल मॉडल देखे हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी चीज बनाई है, बट काफी लोग ने अपने आप को फंड रेस करके सीख के पाइवट किया, अपने आप को पिवट किया कि हम ये कर लेते हैं। So they have been smarter because they had money and they were able to pivot into something else. Okay. Nobody has been successful in the original idea in which they created and raised that money. और so वो भी एक smartness है। और यहाँ पे पैसा तो चलो काफियों ने रेस किया, जहाँ से हम जुड़े उन्होंने भी रेस किया, बट कैश फ्लोज की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको लगता है सैनिटी है इन दी करंट? आई बिलीव, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसमें आई बिलीव दैट यू हैव टू बी इन अ कैनवास व्हिच इज बिगर, व्हिच अलाउज यू टू प्ले अराउंड। Okay. आप लोगों का जो कैनवास था वो एक्स अमाउंट का था जी, 15,000 20,000 करोड़ का कैनवास, जितना ही बड़ा कैनवास था, मेरे को आइडिया नहीं कितना बड़ा कैनवास है। बड़ा कैनवास है। अब आप उसको लाख करोड़ जैसा कैनवास पकड़ के बिजनेस करोगे और वैल्यूज दोगे तो वो कभी होना ही नहीं था। जी, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई बिलीव द कैनवास हैज टू बी बिग टू प्ले। आप अपना कैनवास को बड़ा खुद नहीं कर सकते हो, इट विल टेक इट्स ओन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इटसेल्फ। इट टेक्स 10 years फॉर एनी कैनवास टू बी एक्सपांडेड टू द लेवल एट व्हाट यू वांट। तो आपने कैनवास की बात की, हमें बचपन में बोला जाता था कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, और लेकिन मेरे फादर उल्टा सोचते थे, पैर फैला दो सोचता था चादर आ जाएगी। बट ये बिजनेस का है। हाँ, वो आपके थॉट्स का है। हाँ, थॉट्स और बिजनेस में फर्क है। वो तो बिजनेस तो हकीकत है, थॉट्स में तो आप कितना भी चादर फैलाना ही चाहिए। करेक्ट। तो कैनवास तो पेंट करना है, बट यू कैन नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट मार्केट। एक साथ में इतना कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, लेट्स सपोज इंडिया का कंज्यूमर 2,500 2,000 3,000 पर कैपिटा डॉलर की पर कैपिटा इनकम है जी, वो रातों रात तो बढ़ने वाली नहीं है। उसका एलोकेशन ऑफ स्पेंड टू अ पर्टिकुलर, उसके स्पेंड में ग्रोसरी है, इतना है, वो कहीं ना कहीं से, जब हमने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मोबाइल फोन आया जी, तो अब लोगों के घर में अब नए खर्चे चालू हो गए। अब वो पैसे आवे कहाँ से? हमारा फैशन का बिजनेस कम हुआ because that was treated as a fashion. It was going from the same kitty. It is going from the same kitty. मेरी कौन सी बिजनेस एक्सपोर्ट, मेरा कौन सा बिजनेस इनकम बढ़ गई सबकी उसी दिन के मोबाइल फोन आ गया, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। इट टुक लॉट ऑफ टाइम। तो एनी न्यू कैटेगरी कम्स, इट हैज टू कम एट समथिंग, हैज टू गो अवे। तो वो किटी समझना जरूरी है कि कंज्यूमर की लिमिटेशंस क्या है, बिल्कुल, और आपका प्रोडक्ट कहाँ जाके फिट होगा। बिल्कुल। एंड आर दीज studies and patterns coming in your new brands that you're launching? Absolutely, which is why understanding consumer kitties. Yeah, which is why which is exactly the reason why we are choosing brands and the white spaces that we are choosing to enter into these categories. We're very clear that this top 8 to 10% of India, how they consume, we've also segmented it further to understand. So एक group को हम बुलाते हैं, we call them Singapore. They are the size of Singapore and their per capita spend
or the income is also like Singapore is, and it's only that those Very many small. The number of GDP is households. also Singapore. The GDP is also like Singapore. वही 60 लाख लोग हैं. Okay. The next segment we have, we call them Poland, because they are just into like just about a developed country Right. in some sense. So this is the next segment that we have. 3.5 करोड़ लोग हैं. This is the 3.5 crore people, and then the last is we call them Mexico, which is the rest of it. 8.5 करोड़ लोग. And then they again, their consumption pattern, their per capita is like a Mexico, and the size is also like a Mexico. And rest of India is very different. That can be compared to sub-Saharan Africa. So there are ways in which we are understanding this, and what we are doing deeper and deeper is understanding how Singapore, Poland, Mexico, what are their new lifestyles, what are their new needs, what are the ways in which they think, they buy, they consume, what kind of brands give them that sense of identity or that signifier as well. So we are working a lot in understanding this consumer group, and all the brands and categories that we have chosen are therefore chosen with a lot of understanding on how this top 8 to 10% of India is going to consume, is consuming, and what they need and desire. And you're taking names of some countries. A lot of time क्या होता है, लोग थोड़ा सा सक्सेस आता है बाहर जाने की कोशिश करते हैं. भला जैसे हमारा सोचना ये था कि हिंदुस्तान में इतनी मार्केट है, बाहर जाने की ज़रूरत क्या है. तो क्या बाहर जाना ज़रूरी है? ऐसी स्ट्रेटजीज दिमाग में रखना ज़रूरी है, या उसको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड या एक लर्निंग ग्राउंड लेके चले, इंडिया में ही फोकस करें आज के जो स्टार्टअप्स हैं या बट जो इंडिया बिजनेस है? आई थिंक अगेन टेक सर्विसेज है, उसको तो ग्लोबल सोच सकते हैं. हाँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट को ग्लोबल सोचना, इंडियन कंज्यूमर पे बनाना और फिर ग्लोबल सोचना, आई थिंक इट्स लिटिल, मतलब मार्केट फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स फॉर द ग्लोबल यूजर्स, इट्स लिटिल डिफिकल्ट एट द मोमेंट अनलेस यू बिल्ड अ ब्रांड विद दैट पर्सपेक्टिव. मतलब ब्रांड की तो पूरी स्टोरी को आपने समझा, बट इंडिया में ग्लोबल ब्रांड लायक प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनते हैं? मतलब इंडिया में एप्पल क्यों नहीं है, टेस्ला क्यों नहीं है, जबकि हमारे पास मतलब इनफैक्ट मैं तो ऐसी कंपनीज को जानता हूँ जो कि इंडियन ब्रेन को बाहर सेल करते हैं. सेल मतलब दे यूज दैट नेम कि वी हैव इंडियन टैलेंट. जब वो बाहर इतना अप्रिशिएटेड है, लेकिन हम यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? बहुत सारे कारण हैं जी. आई थिंक आई बिलीव इट गोज बैक टू द वे इंडियन सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड. सो द वे वी हैव बीन, वे और बिलीफ सिस्टम्स हैव बीन फॉर्म्ड. Our belief systems are very, very different. And our belief system में we are very judgmental as such as a society. Success के parameters defined थोड़े अलग हैं. Actually बहुत deep subject है ये, इस पे मैं publicly कभी बात भी नहीं करना चाहता हूँ. But we have gone through our system which are very deep rooted. And that deep rooted systems are the challenge which we have. तो वो रोकता है. If you think about Indian mythology, जी. Brahma, Vishnu, Mahesh, जी. there's only one Brahma temple in India. There are zillions of Vishnu and Shiva I think राजस्थान में कहीं अलवर के पास बस कहीं एक ही है. है. हाँ. So the creator in India is never worshipped. And why is Which that? is Isn't that deeply surprising? Yeah, it is surprising. आप Creator of world. No, आप एक्चुअली इंडियन माइथोलॉजी में जाएंगे तो आपको काफी आंसर मिलेंगे इस चीज इसके. ओके. बहुत आंसर मिलेंगे. हम लोग ये इंटेलेक्चुअली बहुत डिस्कस करते हैं ये. It's not the creator who is worshipped, but it's the householder, or even, for example, the destroyer is worshipped. The administrator and the destroyer is worshipped. Yes, the preserver is most Preserve is appreciated the most in this country. most revered. आपके एजुकेशन सिस्टम में आप लोग प्रिजर्वेशन ही तो सिखाते हो. Correct. I think the use of right brain in India has not been exposed as much as the left brain has been. The creative brain. Yeah. And the why right is side of that? it. I don't know. The answer lies in mythology, in our belief systems. And क्या उसको We had a Varna system. We had a lot of things actually. तो क्या उसको स्ट्रक्चरली दबाया गया है ताकि हम ऐसा कुछ दबाया नहीं गया. We were like this only. ओके ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इंडिया से बाहर क्यों नहीं? वहाँ क्यों? वहाँ पे एनवायरनमेंट दूसरा होता है. वहाँ पे they don't have to deal with that system. उनके बिलीफ सिस्टम तो वहाँ चलते नहीं, वहाँ के बिलीफ सिस्टम चलते हैं. आप जाते हो तो वहाँ. We're also a very young country. I mean, we've only been independent. No, we are not a young country. We are a very old civilization. What old we mean is an civilization, but independent country. As a young country, but a very old civilization. But Correct. our time will बहुत come. डीप रूटेड चैलेंजेस Deep के rooted साथ challenges हैं हम लोग. है. इंडिया में वेदर टैलेंट है, बन Ecosystem सकता नहीं है. है. इकोसिस्टम नहीं है. सब कुछ बन सकता है. India has talent. India has everything going for it. And we'll probably see something coming up. Do you see hard-coded mythology issue getting solved in next 10 to 20 Very years? difficult. नहीं. Very, very difficult. Mythology is only, we use mythology to learn because everything in the world has happened and it's recorded. जी. So there's nothing new which is happening. कहीं ना कहीं Mahabharata has dealt with every situation a human being can go through. Correct. It was recorded so that you can understand in that situation how do you deal with it.
But we took Mahabharata and all so seriously that we never understood the reason behind it. The reason behind it. Yeah. Why was it written? Why it is written? And all the reason for us to learn. I think our learning objectives changed. I know you have sibling, and so how does that change the dynamics between what business you do, what business you don't do, and Now we're working together. It's the first time ever. Oh, is it? Yeah, so we're working together. I think we learned this from him very early. He had this writing on the wall in his room back then. It said, "Strength lies in the differences, not in the similarities." So we are learning to live that every day in some sense. So is it challenging? It is challenging. It doesn't come easily and naturally, but I think we are learning to also appreciate each other for one's own strengths and weaknesses and complementing each other in that journey. In fact, you mentioned about this line, my father also says the same thing. He says, I value independence more than equality. Agar alag ho, free ho, you can do or, conquer the world. But agar equal karenge, to there'll always be a, I do this, I do that. But nobody is born equal. If you follow I'm just saying that when you're doing together, I think it's a challenge that no, it is not riding. about वहाँ पे somebody has accepted कि कोई leader है और मैं subordinate हूँ, तो वो challenge नहीं आएगा फिर. Okay. The problem starts when you start doing your equal. When you clearly not define who's who. I think we follow the law of nature. Nature has not created everything perfect. Yeah. And I think India में education is all about little bit of perfection also. Why do you say that? Perfect child. मेरे बच्चे एकदम perfect everything. I mean, when people start getting 100% is perfect and all, what do you do better than that? Do you think perfection is enemy of lot of things? Perfection is enemy of progress actually. Yeah. आपको रोकता रहता है, to take actions. But perfection is respected a lot. Imperfection is not liked by people. Yeah, people, frown upon we have stereotypes. Stereotypes. We cast people. बहू ऐसी होनी चाहिए, बेटी ऐसी होनी चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए. अपने बिलीफ सिस्टम कमाल के हैं सब. But अगर वो समझ में आ जाए तो आप penetrate भी कर सकते हैं फिर. But Indian society is also very pretentious. We want to please everybody, every time. ये all over India का फिनोमेना है या ये west, north, south कहीं? काफी है. मतलब कोई एक मार्केट ऐसी, मतलब नॉर्थ में तो आई नो सभी जगह है ये. Kerala is a matrilineal society. वहाँ पे कम होगा. And over there also they're moving towards patriarchy. I mean, I think, for them patriarchy is almost understood as modernity. Understood as modernity? Yes. So wow. I find it very perplexing. I don't know the real reason why it is like but that. I find it perplexing. And I know certain business houses where it happens. Yes. अभी एक हाल ही में स्टेटमेंट आया था नारायण मूर्ति जी का कि 70 घंटे हफ्ते में काम करना है, मेहनत करनी है. Do you subscribe to that philosophy? I think I have a different view. She might have a different view, but मेरा personal मानना है कि it applies for some lot of people, not applies for everyone. Everyone. जैसे जो सोचने का काम करते हैं, उनके लिए तो I think जितना free mind होएगा उतना अच्छा है. Correct. And जो सिर्फ करना है उनको, and they can be supervised कि उनसे इतना काम निकलवाना है, उनके लिए में भी सही है. तो it's very contextual or it's in particular grades or particular work. I think it's there. Lastly, मेरा एक पर्सनल अलग मानना भी है कि आप में काम करने की जितनी, जैसे बोलते हैं ना, इतनी सांसें लिखी हुई है आपकी जिंदगी में, काम करने के भी you can burn out also. I see a lot of young entrepreneurs and especially डिजिटल मीडियम में लोग 18 घंटा 19 घंटा काम करते हैं. I don't know how can you work also physically, emotionally, mentally. Burnout हो जाएंगे. आप उतना ही काम कर पाओगे लास्ट में जाके. सेकेंडली ज्यादा काम करने से क्या होता है ये नहीं समझ में आया. इट्स क्वालिटी वर्क व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट. क्या ये एक आदत और एडिक्शन हो जाती है या एक सेल्फ इम्पोर्टेंस लगती है? खाली बैठे तो लोग क्या पूछेंगे, ऐसा लगता है? I आजकल dealt with some young entrepreneurs who are working like this. अच्छा. And I asked them this question. So they are learning to deal with life. They are too young. अच्छा. तो तभी उनको समझ नहीं आ रहा है. They are understanding the subject but not able to find a solution. They are enjoying this. They have that energy and they are enjoying this right now. Enjoying attention and accolades and everything. And they are enjoying that the amount of energy they are able to consume. जब हम भी उस एज में थे तो लगता था कि कितना भी काम करा लो, बर्नआउट तो कभी बर्नआउट चीज क्या होती है पता ही नहीं था. आपने फोमो बोला ऑफ टू इररेलेवेंस कि भाई एज एन एंटरप्रेन्योर
मतलब आपको हमेशा लगता है कि भाई मुझे रेलेवेंट रहना है, कहीं चीज़ छूट ना जाए, ट्रेंड मिस ना हो जाए, तो वो मतलब वो क्यों ऐसा आपको लगता है? मतलब व्हाई फोमो? जैसे एक आजकल नई वर्ड है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, चला गया तो चला गया, अगला देखेंगे। नहीं, आई स्टिल बिलीव इन फोमो टू बी यू स्टिल honest. बिलीव इन Yeah. फोमो? FOMO in the sense के it's not about missing out, it's about any trend you miss and you can be irrelevant. Like if you have missed on the individuality thought, the mobile will make you an individual. If you miss that thought and it's not there, you are nowhere in business, you don't exist. So there are many trends which are emerging, and if you are able to catch it on, you'll make less number of mistakes in terms of whatever you are doing in life. Do you feel the same? I feel in a consumer business, you have to have your eye to the ground, otherwise you're irrelevant. I mean, you're as good as yesterday or today or whatever. So it's very important to remain relevant. There's no other way to be. For many other businesses which are differently oriented, maybe for them it's very different. Any process-driven business can work very differently. Anything that comes to your mind that in your past or current business, there were certain trends that you now look at, if we had missed it, we would have done a big mistake? The Bharat Darshan, which one of our companies used to do, they picked up one very big trend long, maybe around 15 years ago, that woman child in India is getting importance. Okay. And we picked up the trend in Haryana, Rajasthan, all the places. And that changed our approach to, we started sponsoring Femina Miss India. We built a lot of women brands. We thought beauty will become a huge category. We launched lipstick at some crazy prices. Yeah. And women के ब्रांड हमने बनाया, 60 ब्रांड बनाया, 1000 करोड़ का ब्रांड बना, तो हमने वुमन पे बहुत ध्यान. एंड वंस वुमन कम्स इनटू mainstream, the whole society changes, and that's happening in this country right now. Because when I used to travel earlier, 20 years ago, 15 years ago, I think the ratio in a flight was 2 out of 10. Now it's 4 out of 10. आप इतने करीबी से ट्रेंड्स को मॉनिटर कर रहे थे और अभी भी करते हैं. So what went wrong in the Future Group story? I think multiple things, to be honest. We did multiple acquisitions. जी. And we sold many businesses, we acquired many businesses, and we didn't build a strong balance sheet always. We always wanted to do. हमारी एक बीमारी थी, एक बहुत बड़ी बीमारी थी कि हमेशा लीडर की पोजीशन छोड़नी नहीं है. So thought leadership was the kick more than physical leadership. Okay. So we were the first one to bring every trend in consumption in a way, in terms of brands, in terms of formats, in terms of technology. Technology mein we were getting into, I think we were just 6 or 12 months away from predictive science. We could have predicted, because we had all converted all our loyalty program into membership programs. And we were recording the consumption of every individual, through which we could see the pattern and we could predict it. We had got in one of the biggest data science firms from the world to work along with us. We spent a lot of money on that project. And COVID came and just shook up everything. Unfortunately, we were in malls, 65% of our business. And malls were the last to open. And all our businesses were interlinked. मतलब कहानी ऐसी है कि मतलब we could have done, but फिर दो लोगों की लड़ाई हो गई. मतलब it was one in a, बोलते हैं ना, कभी कुछ हो गया, one black swan event आ गया. तो multiple things happened. Had we had a stronger balance sheet, maybe things would have been different. Had we not been in malls, things would have been different. You know, this is very interesting, क्योंकि आज कोई भी रिटेल की बात करता है तो सबसे पहले मॉल में जगह ढूंढता है, ट्रैफिक देखता है, और एक इजी रियल एस्टेट लोकेशन समझ आती है कि चलो मार्केट नहीं करना पड़ेगा इतना फुट. Some categories from the malls are moving. जैसे supermarket and hypermarket in a mall in India won't have that future what it had earlier. So we were part of that. Secondly, multiplex as a category will change its form to a certain extent. Even multiplex, I believe, because the content, the same audience which goes to multiplex is watching 10 hour content now. Right. So the whole, like I used to watch 10 movies, 8, 10, 12 movies a year in multiplex. Now I think it will be 2, 3. Yeah, I mean, so similar is with us. My consumption has totally changed. And for me now to go to a supermarket to shop, I'll park a car, take a stairs, take a elevator or a escalator, take a trolley, shop, again get it built, again सामान वापस डालूंगा, फिर वापस ट्रॉली लूंगा, गाड़ी में डालूंगा, फिर घर में वापस निकालूंगा. तो I think वो इरा बदलाव आ गया. Do you agree, or do you have any different thoughts around? No, I agree. I think that today consumption happens a little differently as well.
I think there is a different idea of convenience for the modern day homemaker as well. So I do agree to this. Earlier at that point when Big Bazaar was born and it was created in the malls, I think we were a public place for India. Correct. Right, and that It's an fundament. outing place. It's an outing place. We didn't पूरा have public परिवार ही आता places. था। Like हम लोग like our parents used to take us to temples at that time. हम लोग उसके मॉल बाहर जाते थे। बाहर से लगते थे, ये लोग मॉल जाते थे। हर- अब नेक्स्ट जनरेशन और कहीं जाएगा। So today, I mean, you are actually socializing more around food, right? I think you're going to a restaurant and spending those 2 hours. You're sitting in a coffee shop and doing that. And you order on the phone और घर पे आ जाता है. So there's a different idea of convenience that has come to you. You want experiences. You don't want to complete your chores, even if it's as a family, in a mall, in a supermarket. How emotionally draining was it, doing the comparison from जहाँ लाइनें लगती थी, and suddenly you see that people are calling it a fall of a great brand. I think I made a movie long time back, 15, 17 years ago. I don't remember the year, but that movie didn't do well as much as I expected. It was a big star, Hrithik Roshan, Saif Ali Khan. It was a table pe acha tha. And when the movie got released, it didn't do well. So I wrote to myself, don't get attached to whatever you create. It creates a hello imaginary attraction to what you have created, and that can impact your decision making or everything. So उस दिन से इमोशंस कम हो गए, जो बिकॉज योर क्रिएशन सबको अच्छा लगता है, इट्स लाइक योर चाइल्ड जी, बट उसके साथ इमोशंस जोड़ लेना, तो वो एक तब हमने एक बार पेंटलून्स बेचा था, तो मेरे एक बहुत अच्छे करीबी फ्रेंड है, उनका फोन है, आप क्या कर रहे हो, यू आर सेलिंग पेंटलून्स, तो मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। ही आस्क्ड मी सेम क्वेश्चन कि आपको क्या फीलिंग, बोला मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ। तो उस दिन लगा कि फीलिंग्स इमोशंस तो निकल गए, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ क्रिएशन। तो हमने बहुत बेच, पर जब भी कोई चीज गई किसके हाथ में अच्छी बन गई, लाइक हमारी एक कंपनी थी फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग, वो बैंक बन गई IDFC। तो हमारे यहाँ प्राइवेट इक्विटी था, वो एवरस्टोन करके बन गया। तो काफी कुछ चीजें अच्छी बन के निकली है, और अनफॉर्चुनेटली इस टाइम अच्छा करने गए, बट जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं, तो उसका एक रिग्रेट है। So what you could have done differently to avoid a situation like this? I think we tried our best to do and salvage, but ये लीगल इशू आ गए। जब एक वर्ल्ड का लीडर, एक इंडिया का लीडर में, आई थिंक कुछ कमियां कहीं रह गई, कुछ ना कुछ हो गया। हैड इट नॉट हैपन, आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन ओके। अभी तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, सीरीज ऑफ इवेंट है, यू कैन कीप ऑन ब्लेमिंग मल्टीपल थिंग्स, बट देयर हैज बीन सीरीज एंड सीरीज ऑफ इवेंट व्हिच हैपेंड विद अस, starting with COVID to till today. I think the series of events. Has the process come to an end now? Process will take its own time. You're the new generation. How do you feel about this? You've seen it, him. I mean, your emotional question would probably be different from his. Yeah, so I don't think you can take away the pain, is the way. But as philosophers say, suffering is your choice in some way. So you deal with it more philosophically than anything else. You also ask yourself, what is it that you fundamentally control? And then you focus on that. So what we can control now is what we do next. What we can control now is how we think about the next. I mean, we know the limitations or the strengths that we have. So we want to build with the strengths that we have and take that, force multiply that really. मेरी एक दूसरी भी थियरी है इसमें कि ये सब फिलोसॉफिकल थॉट है अब जी, कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड व्हिच इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री some years ago, not today. Today it must have much, it was 28 years. No organization के average lifetime survival का, organization has its childhood, it has its youth, teens, it goes through its youth, it goes through its adulthood, and it dies. No organization has survived in its original form except for financial services. जो history of organizations जो भी record करते हैं, I believe the age of the organization is much shortened up, much more. We survived for 36 years. You're way beyond that. It's not about that. It's a philosophical quote. It has. But जैसे कहते हैं कि भी केवल 3 या 4% बिजनेस ही थर्ड जनरेशन देख पाती हैं, तो that's the record ना, वही तो उसी में आ जाएगा। Empirically ये डेटा है, ये सब डेटा में आ जाएगा जी। But this theory I read long time back. तो अभी नया कोई रिकॉर्ड किया होगा तो शायद 22-20 साल के नीचे आ गया होगा। आपको लगता है शॉर्टर होते जा रहे हैं? Yeah, with the new technologies, things will become shorter. वेल्थ को लेके आपके क्या थॉट्स है? मतलब what is your definition of wealth and passing on wealth and succession? इन चीजों में आपके क्या सोच है? I think it's a wealth. हमने कभी वेल्थ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, to be honest. I was a first generation entrepreneur. जी। वेल्थ बनाने का किक
था ही नहीं कभी. एंड व्हाट वी यूज्ड टू ड्रॉ वाज ऑलवेज सैलरीज, जी रेम्युनरेशन फ्रॉम द कंपनी. तो वेल्थ क्रिएशन का काम हुआ ही नहीं. जो भी शेयर्स थे, इक्विटी थी, दैट वाज द वेल्थ ऑफ ऑल द बिजनेसेस इन व्हिच द मनी वाज देयर. जी दैट वाज आल्सो इन अ ट्रस्ट. अनफॉर्चुनेटली वेल्थ तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. जो सैलरी के पैसे थे बस वही बचे. तो इन अ सेंस आई कैन से फिलोसॉफिकली के, बट वेल्थ जो लोग सोचते हैं कि 3 पीढ़ी खाएगी, 7 पीढ़ी खाएगी, ज़्यादा वेल्थ भी हाथ में चैलेंज है. खराबी करती है जनरेशन. एंड होने के बाद कम होना सबसे बड़ा चैलेंज है. तो वी आर इन दैट फेज. जैसे कई बार मैं अपने फादर से बात करता हूँ तो कहते हैं मुझे तो कभी डर लगता नहीं कि मैं लेके कुछ नहीं आया था. या तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें मिला है. अब तुम्हें लगता है ये चला जाएगा. तो do you relate to this concept? No, I don't, because like he said, I've not seen wealth, right? There was nothing I mean, what was in hand was, like he said, the shares and the organization. What you miss is actually the fun, that sort of dopamine that you got when you walked a store, or watching the customers interact with your brands. That's what's missed more than anything else. So that was the most precious thing, if you ask me. तो आपने टाइमिंग ऑफ एग्जिट की बात की थी मेरे से, हमारे बिजनेस को लेके. क्या आपको लगता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस भी स्टेज पे हैं, दे शुड स्ट्रांगली कंसिडर मोमेंटरी एग्जिट्स और लिक्विडेशंस, नॉट ओनली फॉर वेल्थ क्रिएशन बट क्रिएटिंग अ कॉर्पस फॉर maybe diversification, maybe family or whatever? I think nothing is permanent in life, so exit तो सोचना ही चाहिए. सोचना ही चाहिए. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Yeah. आप एंड कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? लोग सोचते हैं कि 3 पीढ़ी बिजनेस चल जाएगा, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी. I doubt. Very few businesses will survive that way. So exit की टाइमिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो इंडिया में टैलेंट को लेके आपको कभी चैलेंज आया है कि भाई हमारे थॉट्स ऐसे हैं, हम लोग ये अचीव करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर लोग नहीं है, ऐसा आपको कभी लगा? या यू इन योर जर्नी यू केप्ट नर्चरिंग पीपल एज पर योर नीड्स? We were able to build a team. You were able to build the team. We had people, but हमारा from outside या internal? Outside. Outside also, which is a challenging thing. A lot of people feel that. We, unfortunately, because I was a right brain orientation, too much of cerebral thinking, we gathered people with that kind of thinking, whereas we needed more of engineers and process oriented people. The doers. Yeah. हमारे यहाँ thinker बहुत हो गए. And सब लोग सोचते थे, हम भी सोचते थे, तो सब लोग कॉपी कर सोचने लग जाते थे. उनको लगता है सर अगर ये थॉट प्रोसेस रखते हैं तो वी हैव टू फॉलो दैट. दैट इज आल्सो अ चैलेंज. यू नीड अ बैलेंस ऑफ क्रिएशन एंड कंट्रोल. हम लोग क्रिएशन में बहुत ज्यादा रह गए. While you're creating brands, do you think India can create brands like Gucci, Louis Vuitton? I think it's beginning is the way I would say it. If you look at Sabyasachi as a brand now, it's gone global. The way in which the story is being told, it is heartening to see how a brand from India can actually go to the world, and the aesthetics, the sense of design, the philosophy of the brand is getting recognized and appreciated globally. So it's a beginning, and I hope many more will come. And that's around fashion, but outside of that, you feel furniture, or I mean, there's IKEA and I do feel that the time will come when Indian design aesthetics, design driven brands are very few. So as more and more of those come through, I'm sure they will go to the world. There is no doubt in my mind that it will go to the world. But the brand has to have something unique and distinct in it for it to go to the world. जैसे इंडिया को एक I mean, we still are third world in the eyes of the Western world, and the people who go there, बाहर जो जाते हैं, तो एक अजीब ही निगाह से लोग देखते थे, मुझे ऐसा लगता है. अब अगर आप बाहर जाओ या इंटरेक्ट करो, आपको फील होता है कि कुछ रिस्पेक्ट या रेलेवेंस या एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन ब्रेन या इंडियन वर्कर्स आ रहा है, या अभी भी बढ़ रहा है? एवरी डे बढ़ता है. उसका रीजन क्या है? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इंडियन पीपल गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. आई थिंक तो ग्लोबल टॉप एम्बेसडर्स बनते जा रहे हैं. ऑल्सो प्लस इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग स्पेंडर in the world. Education mein I think around 40 billion now. People spending for education outside, which is a huge amount. Indians have done so well in other companies globally. And they have done in terms of global CEOs. I think India काफी आगे है. तो I think all this, everything is adding up. ये जो हम कंज्यूमरिज्म इंडिया में जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से इंडिया की जो जोग्राफिकल या क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अभी कोई जिसमें ज़्यादा नज़र नहीं दे रहा है, बाहर बहुत बातें हो रही हैं, तो ये भी बढ़ेंगी और मुश्किलें और बढ़ेंगी.
आई थिंक एवरीथिंग, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड तो पुलिस की तरह बैठा है हर जगह, देख रहा है। तो इंडिया भी बात करने लग गया उस चीज की। तो ये बैलेंस कैसे करेंगे हम? एक वो तो कंज्यूमरिज्म बना के बैठ गए हैं, मतलब जितना अमेरिका आज कंज्यूम करता है इंडिया दे उससे आर कम मूविंग इनटू करता है। कॉन्शियस कैपिटलिज्म या जो भी बोलो। हाँ, कॉन्शियस कैपिटलिज्म एक नई टर्म, वो नए टर्म और भी आ जाएंगे, तो उनके कुछ कंट्रीज में निर्वाणा के ऊपर है वो लोग। आई थिंक वी आर नाउ We're not just reached our beginning to intellect. consume, so Yeah, I we have think not we reached have our intellectual miles to needs. go in that sense. But he's talking of a lot of subjects which will now come about. Come through, yeah. Customers as Fabric they में, ask for it, it will become fabric में real. dyeing, recyclable plastics, ये सब चीजें we'll have to keep on. But that increases the cost of the product. But we have to align to nature in any which way. आपने बीच में बिलीफ्स और रिलीजन की बात की। एज अ ब्रांड आपने रिलीजन से लर्निंग्स ली हैं, या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में क्या रिलीजन भी, या रिलीजन की जो एक भीड़ है जिसको रिलीजन से ज्यादा हमने कभी रिलीजन वर्ड यूज नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन थी, चीफ बिलीफ ऑफिसर। Chief Belief Officer. Yeah, Okay. and that was I think that person became quite renowned afterwards, Devdutt Patnaik. So that chief belief officer का philosophy हमारा बहुत simple था कि belief results into behavior and behavior results into outcomes. आपके जो beliefs होंगे उसके ऊपर ही आपके behavior, and every outcome is result of your behavior and behavior is result of your beliefs. जी. तो हम लोग का यही था कि सभी कुछ है mythology में, and mythology and religion को converge नहीं कर सकते because mythology is still myth. जी, उसमें बहुत कुछ है सीखने को। तो वी क्रिएटेड, आई थिंक देवदत्त ने एक बुक भी लिखी थी, बिजनेस सूत्र। हम लोग सब लोग उसमें जुड़े थे कि हाउ कैन मैथोलॉजी भी अप्लाइड इन बिजनेस। हमारे यहाँ लीडरशिप मॉडल जो बना था वो पूरा बिलीफ सिस्टम पे बना था, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क व्हिच वी क्रिएटेड वेयर इन LSD, that was a LSD was a model of compensation. LSD is the word लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा। हर इंसान को तीनों चीज चाहिए और उसको इक्वल मात्रा में देंगे, कोई भी ज्यादा देंगे प्रॉब्लम है। लक्ष्मी भी देनी पड़ेगी, सरस्वती इज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड दुर्गा इज द आइडेंटिटी एंड व्हाट ही शोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हिज फैमिली। तो ये LSD हमारा मॉडल था, दैट वाज द फ्रेमवर्क ऑन, बट आवर मेजर फ्रेमवर्क वाज ऑन द लीडरशिप मॉडल ऑफ ऑल द रिचुअल्स अराउंड द टेम्पल। तो शंख इज अबाउट कम्युनिकेशन, अंकुश वाज अबाउट कंट्रोल, एंड आईज वाज अबाउट दर्शन, द विजन। वो पूरा एक फ्रेमवर्क हमारा लीडरशिप मॉडल का हमने बनाया था mythology को लेकर। I believe that was a good piece of work which we did. In some sense, every religion is about stories, symbols, and rituals. So when we document any brand, we build anything, we call this the brand Hofstede framework. It's by a very renowned anthropologist who's built this. So abhi bhi, like today also, all our brands, we document our stories, symbols, rituals, which is true of every religion is fundamentally built on stories, symbols, rituals. So every religion is built on a promised land. That is a mission statement of a company. Do you think that is a thought process or philosophy that new age entrepreneurs should use? वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आ जाती है। हम लोग फॉर्मली इसको डॉक्यूमेंट करके कर रहे हैं, इनडायरेक्ट सभी लोग मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट लिखते हैं। पर उसमें वो बिलीफ का फ्लेवर आपको लगता है लोग ले पा रहे हैं? आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। कभी कभी लगता है कि ये गुण हमारे में होते तो कितना मजा आता। तो सर, अगर आपको फ्यूचर ग्रुप दोबारा से शुरू करना होता तो उसकी डेफिनेशन और बाउंड्रीज क्या होती है? मतलब आज 2023 है, मेरे साथ में एक को फाउंडर होता जो कि पूरा चीज कंट्रोल कर सकता था। क्रिएशन हम कर लेते हैं, कंट्रोल में वो अगर एक्सपर्ट होता, प्रोसेस ओरिएंटेड इंजीनियर विद अनबिलीवेबल माइंड, आई थिंक वी कुड हैव conquered the world. So what advice would you have for Ashni, while she is already on a new journey and you are very very closely associated? हम तो सुबह शाम इंटरेक्शन करते रहते हैं। आई थिंक हमारा तो एडवाइस इसको मैं बहुत देता हूँ। शी ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेस क्वाइट अ लॉट। ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेस तो हर चीज को एक फ्रेमवर्क में डालना, ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करना। Do you agree with that? Yeah, I don't disagree with that. So yes. Any specific work style that you don't agree on her side, that ये ठीक नहीं है? No, I have a particular when she does her meeting, when I come to her office, she does a meeting with 12 people in the room. तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि nobody will feel accountable only, because they will believe that you are only going to take a decision. So what is the better way? Better way is you should deal with 2-3 people who are going to take all the decisions. You have to review them. तो मतलब इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए डिसीजन? इतना होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, दो लोग डिसाइड करें, बाकी इम्प्लीमेंट करें। मेक अकाउंटेबिलिटी वेरी क्लियर। कितने लोग भी मीटिंग में बैठो, अकाउंटेबिलिटी लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है अब तो यही डिसीजन लेंगे। जो मीटिंग बुलाता है वही डिसीजन लेने वाला है, जो मीटिंग बुलाता है वो डिसीजन लेगा। हाँ, तो फिर हमारे को डिसीजन लेना थोड़ा है। एनीथिंग
that's better or this better, or you relate to more people with I'm their figuring thoughts? it out, to be You're honest. figuring it I'm out. figuring it out. I feel like in a digital world business, there are many stakeholders, and every role is actually a specialist role. One can And design it hence, differently. we need to keep everyone aware about everything that's also happening, जी. and make everyone accountable for what their specialist area of focus has to be. आपने एक शुरू में बात की थी, it's not a world of specialization. You did not, go for a management education. You went for design. एक entrepreneur के लिए क्या एक critical skill of the business सीखना ज़्यादा ज़रूरी है या सारे areas में reasonable पकड़ होनी चाहिए? I think this is a very interesting point which you have raised. I believe उसको धंधा और पैसा समझना सबसे पहले चाहिए, and rest he has to be knowing all the other disciplines. सारे जानने हैं, लेकिन उसमें भी एक sequence है. Yeah. Okay. धंधा in the sense growth, and paisa in the sense allocation of resources and where is your money. And rest you have to be aware of all the other disciplines. And you're experiencing that in new brands? Yeah, that's the only way any business can grow or thrive. There is no way one can do this without knowing how you will grow your business and how you allocate your capital or any resource for that matter, people and so on as well. You not only build businesses, you build talents also. तो एक एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेके बहुत फोकस है लोगों का, बिकॉज आई थिंक इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, पीपल फील और द एंटरप्रेन्योर टुडे फील कि भाई उनका रिस्क हेज हो रहा है, कि भाई इतना पढ़ाई लिखाई किया तो अच्छा करता होगा, अच्छा समझ होगा. तो डू यू सी दैट एज अ वैलिड सिचुएशन या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है, एक्सपोजर का फर्क पड़ता है. एक्सपोजर का, जैसे जैसे अभी हम लोग, जैसे ये बोल रही है अश्नी के शी हैज टू डील विद द टॉप 10% ऑफ इंडिया. या Now she has to have from that top 10% of India to deal with that top 10% of India. और उनकी समझ जनरलिस्ट होना और स्पेशलिस्ट कोई कोई चीज़ में होना. आई थिंक हम लोग ने इन फ्यूचर वी नर्चर टैलेंट लाइक क्रेजीली. We used to get in 100 designers from Nifty and NID every year. We used to pick up 50 chartered accountants and groom them up. We created a position like a chief belief officer. मतलब अलग अलग बहुत काम किए. Multidisciplinary team that came together. We had sociologists, anthropologists in our organization, and I खाली एक philosopher छोड़ के सब थे. तो आपने फिलॉसफी की बात की, तो वहीं से कहीं रिलेटेड है फिलैंथ्रोपी. तो वहाँ पे आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस या क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है? I think philanthropy, and it can be anything, money, time, I think somehow मेरे को ये सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता है philanthropy. अच्छा. Why should it be separated out from your daily routine or daily life? Our life has, either you are a giver or a taker out of life. I used to believe you can't be both. You can't be both. मतलब आपका गिविंग या टेकिंग, और यू आर अ बैलेंसर और यू आर व्हाट यू कॉल इक्वलाइजर. आपको जितना मिलता है मैं उतना देता हूँ. मैचर. ओके. ये थियरी भी हमारी बाद में बनी. मेरी थियरी तो हमेशा थी कि यू कैन डिफाइन इजीली पीपल इनटू गिवर और अ टेकर. जब हम कोई भी चीज नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं बिजनेस में, डील के लिए, तो हम जीरो सम है, कोई देगा कोई लेगा, और कुछ लोगों से आप डील ही नहीं कर सकते हो जो टेकर है. So you feel you are a taker or a giver? I was always the problem is I was always a giver. But that's a good thing. It's good thing. I have no regrets on that. But I somehow believe इतना देना भी सही नहीं होता है. नहीं. तो आपके घर में वैल्यू सिस्टम में how do they see this? Have they also subscribed to this philosophy कि we would they are also giver? You have to ask. I think overall I feel because of the kind of parents we have, both my mother and father, they are benevolent people by nature. They're very nurturing people by nature, and we've always believed that charity begins at home, or doing good in some sense begins at home. So whether it was in the home or even in Big Bazaar, I had created a program called the Seva program, for example. One of the things he had written down in his book was there were 3 things that are going to define if someone shops with you. Greed, buy one get one more, so that will help. Fear, buy it today otherwise kal nahi milega. And altruism, which actually fundamentally meant that if you're a good citizen or if you do good for the community, people will choose you versus the next door store. So we created a very simple program called the Seva program, where in the store, in the angan of the store, the store would make food and it would feed people. Anyone from the community could come and eat. And anyone is allowed to donate anything, whatever you think you should, into a bowl, and that bowl was given away to a charity that the store had decided on. So it was very led from the ground. It was never top driven, and it made the store very humble in the way in which it dealt with its customer. Otherwise,
these used to be good, like these are large stores, they used to be Because our brand was 50,000. a big giver. So it was Very a big good giver, and in that way it took the community that it was with along with it. So one This of the was- frames in my office is Mother Teresa's quote, which give till it hurts. हमारे कस्टमर बोलते थे आप इतना क्यों दे रहे हो हमारे को? That has been the tragedy of our life. But then We have given so much that it's hurting now. but I think as I said, it's a zero sum game. आप देते हैं वापस. Yeah, it's आता है. okay. जैसे हमारे घर में क्या कहते हैं, our belief है कि माता बहुत बिलीव करते हैं कि भाई आप एक हाथ से दोगे वो आठ हाथ से वापस देगी. तो कभी देने से पहले सोचना नहीं चाहिए, ऐसा एक बिलीफ है. तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा एक कोई फाइनल मैसेज टू द लिसनर्स ऑफ भारत, कि आप उनको क्या कह रहे, जो सोच रहे हैं आगे जाने की, ब्रांड बनाने की, क्या उनकी सोच होनी चाहिए, क्या उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, and how should they go about it? So after going through a lot of this destruction, creation and multiple exercises which we have gone through in the past 3-4 years, I have learned to deal with life. It can be a spiritual journey or it can be a very different journey, because dealing with life is also not easy, because you have to 24 घंटा दिन में निकालना भी पड़ता है. एंड आपको इतनी जिंदगी में 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, 60 साल, तो वो भी इतना नॉट ईजी. ह्यूमन बीइंग हैज टू. तो मैंने एक चीज सीखी और समझी है कि कुछ भी करो, हार्ट एंड माइंड को कन्वर्ज करिए. एंड अगर हार्ट और माइंड कन्वर्ज होगा तो यू विल बी इन अ गुड जॉयफुल स्टेट. माइंड कुछ बोले, हार्ट कुछ बोले, पूरा दिन कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे. तो कुछ भी करो उसमें हार्ट, और जो भी काम करो हार्ट और माइंड कन्वर्ज करके करिए. That's a very beautiful suggestion, sir. Very beautiful advice. Ashni? Something simpler, just know your customer and make that your source for taking a lot of decisions. Make that your source to Make make that all your your- decisions. वही गंगोत्री है. Make that your source for taking decisions, and you'll keep growing and learning, hopefully. Consumer is talking, he is expressing himself, he is telling you something. You have to listen. You have to keep on listening. Listening. Yeah, great. Thank you so much Thank you. for coming for the discussion today, and I thoroughly enjoyed it. I hope you also had an interesting insight into your own thought process. Good. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Again.